Hello everyone. So our new chapter is financial statements of sole proprietorship. So beta, what do you mean by financial statements? These are such statements which you prepare at the end of financial year and which disclose our financial position and financial result for the whole financial year. तो पूरे साल में हमने क्या क्या करा है, क्या क्या आपने एक्सपेंस करे हैं, what have you earned from the business, all these are recorded in our financial statements. So here we are going to learn about the sole proprietorship statement, because in plus 2 you will learn about the partnership financial statement as well as the company's business organization's financial statement. So in sole proprietor financial statement we have three parts. In first part you will learn about the trading account, then profit and loss account, then balance sheet. Trading and profit and loss are prepared combined. These are prepared by dividing the same account. In first segment, you will prepare the trading account, and in the second segment, you will prepare the profit and loss account. So here I have written the trading account format, and the sequence would be trading and profit and loss account for the year ending 31st March and whatever the year would be in your practical problems. And this is the nominal account. You will debit all the एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. और ये जैसे मैंने सीक्वेंस लिखी है सेम ही आपने लिखनी है, बिकॉज इन द फर्स्ट कॉलम आई हैव राइट ऑन द डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक. मतलब आपने ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग ओपनिंग स्टॉक के साथ करनी है. अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है. इफ़ आई एम रनिंग इन 2021, सो ऑन द 1st April 2020 जो मेरे पास स्टॉक पड़ा है दैट वुड बी माई ओपनिंग स्टॉक. एंड ऑन 31st March 2021 मीन्स द नेक्स्ट ईयर जब मैंने ये फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म करके लिखना है तो वो मेरा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक. और यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस, टू परचेजेस. और परचेजेस में से आपने ऑब्वियसली जो आपकी रिटर्न्स है वो लेस कर देनी है. रीजन बीइंग दीज हैव गॉन टू द सप्लायर इटसेल्फ. सो ये हमने इसमें नहीं लिखनी बिकॉज ये हमारी स्टॉक में अब नहीं है. और उसके बाद आपने सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं. और बेटा एक्सपेंसेस में आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि this includes only the direct expense. Reason being, we divide our business expenses into two categories. One is direct and other is indirect. और जो आपके direct expense होते हैं वो आपके first segment में आते हैं in the trading, and the indirect expenses are treated in the next segment में, मतलब profit and loss account. अब direct और indirect की पहचान कैसे होती है? Direct expenses means like wages, carriage, freight, ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा है. और बेटा वेजेस, कैरेज, फ्रेट क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज इसका भी एक लॉजिक है कि वट एवर द एक्सपेंसेस यू हैव इनकर्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने अपनी प्रोडक्शन के लिए स्पेंड करे हैं और जिनको मिला के आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बननी है. दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस. अब क्वेश्चन देख के आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट आर इंक्लूडेड इन योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड व्हाट आर इंक्लूडेड इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है. लाइक अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रही हूँ तो सैलरी इज़ नॉट माई डायरेक्ट एक्सपेंस. द ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, सेलिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, इन जनरल हमारे जितने भी खर्चे होते हैं, दीज आर नेवर द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली आएगा पावर, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा लाइक फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री फ्यूल, ठीक है जी, और वेजेस or any other direct carriage, freight carriage inward means which you have spent on the purchase of goods. And finally on the credit side I have written sales. Sales means the revenue you have earned from the sale of goods, less returns. Returns means the सेल्स रिटर्न्स. और सेल्स रिटर्न्स का एक दूसरा नाम भी आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है, दिस इज द रिटर्न इनवर्ड्स. एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे इसलिए आता है, रीजन बीइंग दिस इज लेफ्ट ओवर विद यू, यू हैव नॉट यूज दिस एंड दिस इज केप्ट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सो दैट इज वाई इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट. सो फाइनली जितनी भी आइटम्स आपने पुट कर दी हैं वो करने के बाद अगर आपकी क्रेडिट साइड लार्जर आती है, यू पीपल विल राइट टू ग्रॉस प्रॉफिट. एंड इफ डेबिट साइड इज लार्जर, ऑब्वियसली आपका खर्चा ज़्यादा, इनकम कम है, you will incurred a gross loss. So finally the last figure would be to gross profit and by gross loss. So by this
trading account would be over, and the next segment would be your profit and loss account. So the next segment is profit and loss account, and in profit and loss account we will transfer our gross profit or gross loss which we have calculated from the trading account itself. Then we come to know our net profits. Fine. So here its format is there. If you have incurred a gross loss, you will put on the first side of debit, it would be to loss brought down, and if we have gross profit, obviously it is profit, it would be credited here, and it would be posted like this: by gross profit brought down. And since it is a nominal account, you will debit all the expenses, the indirect one, the expenses which have not been the part of trading account, they would be posted here. Means to salaries, to general expense, to office expense, any other expense which are not the part of trading would be posted here. And on the credit side, after gross profit, in the below you will post all the incomes. In incomes में क्या क्या आ जाएगा? Rent received, interest received, commission received, interest on investment. These are such incomes which are the part of your business operation. तो बेटा ये सारी हमने कर देनी है credit. And by solving this, we will get the answer of net profit. So here you will post net profit. जैसे हमने लेजर को बैलेंस करना है, इन द सेम वे ये अकाउंट को बैलेंस करके हमारे पास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट. सो नेट प्रॉफिट करने के बाद अगर आपकी डेबिट साइड, जस्ट इन केस अगर बैलेंसिंग करने के टाइम डेबिट साइड लॉन्गर आती है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय नेट लॉस, सिंस वी हैव मोर एक्सपेंसेस देन इनकम्स. तो अगर ये साइड बड़ी आती है इनकम, इट मीन्स यू हैव मोर इनकम्स देन द एक्सपेंस, तो हमारे पास आ जाएगा टू नेट profit. So in this way you can prepare your profit and loss account. In reality जो trading और profit and loss account है वो segments में नहीं बनता, मतलब एक ही बार आप ड्रॉ करते हो और उसको हमने डिवाइड कर देते हैं. मीन्स आपने हेडिंग्स अलग अलग नहीं लिखनी, बनाना अलग अलग है. मीन्स यू विल डिवाइड द फर्स्ट पोर्शन इन योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड द नेक्स्ट पोर्शन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और दोनों ही जो अकाउंट्स हैं उसमें आपको आइटम्स पता होने चाहिए कि व्हाट आर द सीक्वेंस एंड व्हाट आर द आइटम्स विच आर प्लेस्ड इन बोथ the accounts, and it is all about the logic. Again I'm repeating, in trading account we come to know our gross profit. So that is why जितने भी हमने स्टॉक खरीदा है, हमारे पास पहले पड़ा है, हमारे पास बच गया या हमने जो बेच दिया है, वो सारी ट्रीटमेंट हमारी ट्रेडिंग में होती है. और उसके अलावा जो हमारे बिजनेस के ऊपर वाले खर्चे लगे हैं, मतलब हमारे ऑफिस के खर्चे, हमारे सेल्स के ऊपर खर्चे, एनी अदर एक्सपेंस जनरली वी हैव स्पेंड, तो वो सारे आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और इसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो बनती है हमारी बैलेंस शीट. सो आफ्टर दिस वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट. So in balance sheet we will write on the above side, this is balance sheet as on. बेटा as on क्यों? क्योंकि ये हमारा एक अकाउंट नहीं है, and this is not prepared for a particular year, it is prepared at the end of the day. So हमने यहाँ पे क्या लिखना है? Balance sheet as on 31st March 2020, whatever the end of your financial year, you will write on the above. And we have two sides here, the right side and the left side. Right side would be known as asset side, and on the left side you will write liabilities. So the format would be liability rupees and asset rupees. It is not consisting any debit or credit amount. Fine. So by the name it is clear. In asset side you will post all the assets. For example, we have furniture, we have machinery, we have building, we have cash, we have closing stock. So by these names, जो भी आपके क्वेश्चंस में एसेट्स बेटा गिवन है, whether these are current assets, non current asset, सभी की पोस्टिंग आपने कर देनी है on the asset side. Fine. And on the liability side you will start the question by putting capital. Capital must be in the inner column, reason being it is to be adjusted plus net profit minus drawings.
सो कैपिटल में आपने प्लस करना है नेट प्रॉफिट और माइनस करनी है ड्राइंग्स। रीजन बीइंग दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर द कनेक्टेड वन। जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा, उसमें हमने क्या निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड दैट कम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें हमने से क्या कंक्लूड किया, द नेट प्रॉफिट। नाउ नेट प्रॉफिट इज द फाइनल प्रॉफिट विच कम्स इन द पॉकेट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, एंड दैट यू विल प्लस इन योर कैपिटल। सो कैपिटल में प्लस करना है नेट प्रॉफिट और लेस करनी है ड्राइंग्स। इसका कंसेप्ट ये है क्योंकि सोल प्रोप्राइटर इज गेटिंग ईच ऑफ द ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है जी। तो इसलिए हमने सारा प्रॉफिट जो अर्न करा उसको दे दिया, और जो उसने ड्राइंग्स करी थी मीन्स द पर्सनल एक्सपेंस, वो क्या कर दे, माइनस। सो फाइनली ये आपने पुट कर देनी है in the outer column. In the same way, what else liabilities can be there, like bills payable, creditors, bank loan, any outstanding expense, or we can say any bills payable दैट आई हैव टोल्ड। तो एट द एंड जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ है वो आपने सारे यहाँ पे पुट कर लेनी है, और लास्ट में हमने इन दोनों को टोटल कर लेना है। वी विल टोटल द लाइबिलिटी साइड एंड ऑन द एसेट साइड, एंड फाइनली these have not any balancing figure. So that means ये दोनों sides आपकी बराबर होनी चाहिए, इसमें से कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आती। और अगर आपकी बैलेंस शीट मैच होगी मीन्स दोनों में से कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आई, इट मीन्स योर क्वेश्चन इज होल करेक्ट, ठीक है जी। सो दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट वी प्रिपेयर, और इसको बनाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि इसको देख के हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल होती है, और ये हमारे बिजनेस की पोजीशन को फाइनल टच देता है कि आपके पास एट द एंड ऑफ द डे क्या क्या बचा है और कितने कितने आपने पैसे लोगों को देने हैं। सो दैट शोज आर बैलेंस शीट। फाइन।